को लेके डिस्टर्ब हुए ऑब्वियसली जे भी मु कहनी कि मतलब आई एम पर्टिकुलरली तो से में 2-3 मिनट आगु जॉइन कर तो इट्स बेटर टू जॉइन 5 मिनट्स बिफोर किसी नहीं जॉइन करके म्यूट करके थोई दो अदरवाइज यू कैन लेफ्ट आफ्टर जॉइनिंग देन यू कैन इन बिटवीन यू कैन जॉइन so once again welcome everyone to the voice of so today we will talk about 25 most important MCQ for the CSC that is not CSC for the OCS ठीक है तो OCS में देखिए दैट इज द OPSC सिविल सर्विस में देखिए ओडिशा सिविल सर्विस में so 25 most important questions related to the oceanography. Now this will be the second part of your oceanography. The first part we discussed in the morning and this one is going to the second part of your MCQ. Now the first question is before you. So today's subject that we are going to discuss, this is the second part of oceanography. In each set we talk about or we discuss 25 questions where each 4 option will be discussed in depth and with clarity. So those who have not covered the syllabus, now this program, what about this program is that now ये जो MCQ program रही हमारा target or what exactly the target of that is the ways of is that we will cover the syllabus through the MCQ. That's our problem. That is the target. Okay. Hope you're getting me. The target of this course is that to cover the every section of your syllabus in such a way that we will try to attempt at least some question. है ना ये मतलब प्रॉब्लम बुझी पड़छ ना कि एबे माने क्लास मझिरे एंट्री कले बारंबार मते ए करिया पड़िबो तेणु करी 5 मिनिट्स आगरू जॉइन कर दो so that it would be convenience for me as well. Now the first question before you, you have to answer the deepest point of the Indian Ocean. Sir, option D. D. Java Trench. Option D. Very good. Now obviously the deepest point of any ocean will be the trenches. Now as here you can see, now something I have written like central part, Somalian basin, here is basin, but basins are not the deepest part of the ocean. Always the deepest part of the ocean is the trenches. Let's say for example if I draw Indian Ocean, here would be Australia, it is Australia dekhe Java, Sumatra, all this like this would be your Indian Ocean. फटाफट ड्रॉ कर दो एमती ड्रॉ करिया भी सिखाओ पड़िबो. Now here is the deepest point of Indian Ocean, that is the Java Trench. Now trench are like this, meeting of two plates. Now one plate is moving down below another plate. This is also known as what? Subduction zone. आपको कौन कहे subduction zone. Plate tectonic जो मैंने पढ़ी थी वो. Hope you can get me. That means one plate, the denser plate will move below the or move down below the less denser plate. Let's say this one is your oceanic plate and this would be the continental plate. That means oceanic plate always remain or always denser as compared to the continental plate. So that kind of way the oceanic plate will that is the move down or it will obviously subduct below the continental plate. Because oceanic plate though the thickness remains very less but density of ocean plate is more. That means that we question discuss करूँ. Let's say I could have asked you a particular explanation either तुमको ask हो whether the density of ocean plate is more or the continental plate. Obviously no doubt the density of the oceanic plate is more as compared to the continental. Because of what? Because of iron content. But the thickness oceanic plate रो कम थाए है ना ना बुझा पड़ो नेटा काहू एवरीवन कंफर्टेबल बुझा पड़ुची है ना. तो प्लेट दैट मीन्स दैट इज द मीटिंग ऑफ टू प्लेट्स. आपको कौन कहे कन्वर्जेंस बाउंड्री. आपको कौन कहे सबडक्शन जोन और कन्वर्जेंस बाउंड्री. अगेन आई रिपीट, लेट्स से one plate is like this and one plate is like this. Let's say for example this one is continental, C for continental, and this one is oceanic plate. Now the oceanic plate is moving down below the continental plate. Continental plate is light, that means it would be not heavier, it would be light, but this one would be a heavier, it would be heavier. Denser, that means heavier. The कोनोसी denser density अधिक रहले that would be definitely it would be heavy. So it will moving down. So the oceanic plate is moving below the continental plate है ना. तादर कौन हबो ये जो बकल पार्ट एठी कौन हिजबो बकल हिजबो है ना. ये प्लेट रो जो फ्रंटल पार्ट टा सेटा बकल हिजबो. So that it would be like this है ना. एमती मूव करिवो and this part would be the deepest part of the ocean जहाँ को हम कहते trenches
है ना तेणुक से कौन सी हाँ जदि मुझे तुमको दी तीन टा ट्रेंच देता डिफिकल्ट होता टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर आंसर but as it is written like the what trenches, so trenches are obviously the deepest part of ocean. जदि तुमको trenches न था कौन ही था आंसर for example if I delete the that option D then what would be the answer if I delete this one. Yes, sir. Option A. Central Indian Central Ocean. Indian Ocean. तो obviously that would be the central Indian ocean ये भी तुम्हारा basin ये भी गोटे होची कोन basin कहले कोन the flat part of the ocean. Let's say ocean रे एमती कोन थाए ocean रे जो flat part टा this below part आकु कहजे हमरो basin आकु कहजे basin the flat part टा पूरा जो तळे थाए है ना तो hope एबे बुझा पड़ी जो ocean रे basin कहले कोन ठीक अछि now move on तो एबे subduction zone or the convergence boundary एमती कहउची. Next question 90 degree reach found in which Indian Ocean. ocean? Indian Ocean. Indian Ocean. So if you are aware of the 90 degree reach in Indian Ocean, then India ko pote dekhi jibo 90 degree reach. Whether it will pass through this region, through this region, through this region. Which region? Mid part देख जीवो. Ko side ro? Middle side to sir जीवो. India घाना साउदर्न साइड अब ए पटु जीवो है ना कारण इंडिया रे एक्सटेंशन केते इंडिया रे एक्सटेंशन 97 डिग्री 57 से हां. ताल दैट मींस 90 डिग्री टा ए पटु जीवो ना ना बुझा पड़बनी बे है ना सो दैट मींस 90 डिग्री रीज तो एथि दीटा क्वेश्चन हम सॉल्व करूचे सो दैट मींस हम देखो इंडियन ओशन को जदि तुम ड्रा करिवो सो 90 डिग्री रीज वुड बी लाइक दिस लेट्स से दिस वुड बी ए लार्ज इंडियन ओशन ये रहबो हमरो अफ्रीका लार्ज इंडियन ओशन है ना तो ये पार्ट रहबो हमरो 90 डिग्री रीज. Okay, reach ro meaning kono anyone what is the meaning of reach? Reach uplifted part attached to the floor of the ocean रो floor रे थाए है ना तो 90 डिग्री रीच हमको एठी देखा जो 90 डिग्री रीच कहले दैट मींस द ग्रीनविच अछि हमर ग्रीनविच केते 0 डिग्री तो सेटू हमें जिबा 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री टा हमर अंति ओशन रीच अछि एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रीच ऑफ इंडियन ओशन अगेन आई रिपीट either they will ask you 90 degree reach or they will ask you longest. Okay, longest reach तो ये दीटार आंसर गोटिए ना बुझा पड़बनी काहू longest reach of Indian Ocean is 90 degree reach because 90 degree केमिति कैलकुलेशन हला जो ग्रीनविच अछि लंडन जोटी 0 डिग्री तो सेठू हमें पड़ले 90 डिग्री रे पहुंचबा तो इंडियन ओशन रो ठीक 90 डिग्री एमति तमरो लॉन्गिट्यूडनल अछि नॉर्थ टू साउथ 90 डिग्री रिच फिजिकल मैप रे तमे देखि परिबो ना बुझा पड़बनी काहू explanation heijibo that means there could be two questions in this particular option either they will ask you the longest reach of Indian Ocean or they will ask you the 90 degree reach already OPSC thare पचार सारिछि है ना तो reach रो मीनिंग कोन reach रो मीनिंग होछि uplifted part in the ocean तो लेट्स से एमती मु तुमको ओशन गोटे फ्लोर एटा गोटे ओशन फ्लोर बोली जस्ट इमेजिन करो एमती अपलिफ्टेड पार्ट को कहा जे रीच ये होछि वाटर लेवल ओशन रो तो ओशन तळे एमती माने छोटो छोटो हाइट रो पूरा लॉन्गिट्यूडनल किंबा मतलब से लॉन्गिट्यूडनल हे परे जा भी केमती हे परे नॉर्थ साउथ हे परे किंबा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन एमती रीचेस सब थाए है ना तो ए मान को रीच अर्थ कोन अपलिफ्टेड पार्ट लेस लाइक लेट्स से 100 मीटर 200 मीटर दे आर नॉट लाइक माउंटेन एमती बड़ बड़ नथि ओशन रे से माने तळे तळे थाए नंबर ऑफ रीचेस थाए ना बुझा पड़िबनी काकू रीच यदि तुम चाहिबो देखे देबी मु रीच को जस्ट अ मिनिट so that you will have clarity. एक मिनट में देखिए दोची जो बॉटम टोपोग्राफी पूरा तुम्हें जानी जो गोटे मैप रे मु देखि देबी सब जक सो दैट इट वुड बी क्लियर है जो पूरा हमें बॉटम टोपोग्राफी रे जेते क्वेश्चन अछि गोटे रे ही सॉल्व कर दे परिबा हियर यू कैन सी these are the reaches of now the screen is visible to all screen is coming to all Again. है ना you can see the reaches है ना it is ocean रो गोटे तुमको bottom देखा जाई छी these are the reaches you can see these are the parallel lines
And these are the reach of ocean. And here is the trench. You can see the trench. These are the deepest part of ocean trench. Fine, everyone? Is it visible to all? Yes, sir. These are the island. You can see the land which touches or coming out of surface of the water. There will be island. Surface upper को आसीगले island. Surface तले रहिले sea mount. Okay. Surface तले रहिले sea mount. Surface upper को आसीगले island. These are the trenches you can see, and this is your continental shelf. This one is continental shelf. काली सकाले ना आज गुटे आमे करथिले continental shelf, and this could be continental slope. ये रहबे तमरो continental slope. ये रहबे तमरो basin. ये basin जोटा मु आउट के पूर्व क्वेश्चन डिस्कस करूतले आमे. होप एथरे तमरो सब क्लियर हिजो. बॉटम टोपोग्राफी समस्त तमरो क्लियर हिजो. This one is basin, this one sea mount, this one is island, this one is continental shelf. आउ ये जो तमरो एमती देखाउची, this one is slope. ये केमती slope अछि ना, तो आकु slope. आउ ये जो देखो एटा होची तमरो continental shelf, SHELF. ना बुझा पड़िबनी, ये होची continental shelf. Clear everyone? Sir. Clear हिजो. Hope this much is enough to solve the bottom topography, isn't it? Done, everyone? Bottom topography Done, clear? sir. Okay. Yes, sir. But one thing you have to remember here you can see the some lines like एठी किछि देखाउछि ना, the depressed line, empty vertical lines depressed. These are the sea canyon. एमन को कहजे sea canyon. तो एमती तुमको MCQ रे भी पचार जाई पारे कि which region of the ocean will have sea canyon. तुमको दिया जबो mid ocean. बिल्कुल भी नो देखा एठी mid ocean रहछि कि ना, this is in shelf and slope. This is in shelf and slope रे तुमको देखा जबो. This would not be found in but mid region रे तुमको देखा जबोनी. That means ये कोठी देखा जो self or in slope. ना बुझा पड़िबनी canyon. Canyon देख बुझा पड़िबो एबे. Of canyon एबे हमको बुझा पड़िबो. Done everyone? Canyon. Sir. हाँ, कार के डाउट अछि कहि दो फटाफट. Otherwise I will move on. Let's move on to the MCQ part. Now just a minute. ना एबे खत्म हो गेला तो नेक्स्ट केतेटा गला हमर MCQ दिटा नै कि ठीक अछि. The third MCQ, arrange the island from north to south. This one I think I did it in morning or somewhere else. So arrange the following. These are the island of Indian Ocean. You have to arrange from north to south. We are dealing with oceanography MCQs. Try to answer. Because this is the request is that please join before 8 PM पूर्वरु जेतेबेले क्लास शेड्यूल दिया जबो. ओके, ऑप्शन कोन कहलो डी. ओके, सो केते जण ऑप्शन डी कहिछ केते जण. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर माने को एई भलिया तुमको क्वेश्चन अधिक आसीबो. स्पीकर ऑफ कर दियंतु दोज वर हैविंग. Option B. So this would be what? Option D. So correct answer is option D. Okay, thank you everyone. So here we have option D. Now that means हमें देखिए इंडियन ओशन रो मैप देखि देबो समझते. First Maldives, then Chagos. Chagos is famous for what? Chagos is famous for what? Chagos Island. It is Diego Garcia and that is the naval base for USA. Icaro naval base is USA. Then as Seychelles and Mauritius. Mauritius is famous for what? For the Hindu. Many Hindu peoples are living there. 80% population Hindus. Mauritius ro कोठी अछि. Madagascar तमे देखो. Let's say this would be your Africa. Africa एमती अछि है ना. एठी Madagascar and एठी तमरो साउथ रे Mauritius. Here would be Seychelles, here would be Chagos, Maldives and India. तो एमती तुमको Maldives आसीबो. M for Maldives, C for Chagos, Seychelles, Mauritius. तो हमें देखिबा नॉर्थ जाके जो आगे Maldives, and Chagos, Seychelles, Mauritius. Done everyone? So let's move on to the next question. Now Galapagos Island found in which ocean? This was also in news. Galapagos Island was in which? So this is situated in which ocean? Pacific. Pacific Ocean. Pacific Ocean. ठीक अछि. Galapagos Island Pacific Ocean रो को पार्ट रछि? Whether this is eastern, western, central, southern, northern, where? Sir, Western. Eastern. Eastern means किछि indication करि परिबो. Ecuador, sir. Ecuador सेटा. Galapagos Island famous for what? Survival of the fittest theory. Giant turtles.
दुनिया रो सबटु बड़ टर्टल्स एठी देखा जाए केबे गूगल करके देखिथबो केते बड़ दे आर सो बिग जायंट टर्टल्स हाँ तुम कही पार सर्वाइवल द फिटेस्ट आल्सो है ना तो जायंट टर्टल्स पे जना जाए दुनिया रो ओनली आइलैंड वेयर द जायंट टर्टल्स सर्वाइव्ड पैसिफिक ओशन रो लेट्स से हियर वुड बी साउथ अमेरिका तुम ठीक साउथ अमेरिका ये पाखरे देखा जो गालापागो आइलैंड है एठी तुमको साउथ अमेरिका एठी पाखरे देखा जो गालापागो आइलैंड है ना ईस्टर्न पैसिफिक ओशन अछि फेमस फॉर द जायंट टर्टल्स नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज इंडियन ओशन डायपोल होप गालापागोस आइलैंड हे जिवो Yes, what sir. is Again. Indian ocean dipole option 1 is a wind system Indian Ocean. Option 2 high pressure in Indian Ocean. Option 3 low pressure in Indian Ocean. Option 4 is the sea surface temperature phenomenon. Sir, sea D, surface sir. temperature See, phenomenon. surface Surface temperature phenomenon. funding. D, sir. So answer is D. Surface So Indian Ocean dipole फटाफट में डिस्कस कर दो Indian Ocean dipole here कारण हमारा टारगेट कौन to revise the syllabus through the MCQ. This would be India and this is going to be your Africa. जदि Africa में draw करी फटाफट and here would be Australia. Here would be your Java and Sumatra. तो इठी रहो तुम्हारा Arabian countries. ये फटाफट Indian Ocean एमती draw करिए तुमको भी सीखा पड़े because you have to draw in main exam as well. Now Indian Ocean dipole, when I say Indian Ocean dipole, that means one pole. That dipole means dual pole. One pole is your east, one is your west. This is the dipole of Indian Ocean. है ना मतलब आपको कहा जाए one eastern, one is western. So this is the dipole of Indian Ocean. When I say Indian Ocean मतलब dual pole, then exactly कौन ये गोटे sea surface temperature यार दीटा phases अछि one would be positive phase, one would be negative phase. Two phases are there in Indian Ocean dipole. Positive phase ध्यान से मन रखो whenever the Indian Ocean dipole हमें मतलब consider करूँ whether the phase is going on positive or negative, that is on the basis of western part of Indian Ocean. If water temperature is more in the western part of Indian Ocean ताहले हमें ताको कहबा positive phase. Again I repeat, if the western part of Indian Ocean water temperature close to Somalia or this particular region Kenya वगैरह यदि एठी water temperature अधिक अछि more warm water, then that would be the positive phase. Jodi eti tomoro less warm water अछि or I would say the cool water, that would be the negative phase. Na बुझा पड़िबनी? Done everyone? So this is all about the Indian Ocean dipole. Done. तो हमरो टारगेट कोन कि कांसेप्ट भी ता सांग सगरे खबर कर दो सो दैट हमरो तुमको आउ किछि क्वेश्चन पचार पे इंडियन ओशन डायपोल रो हां जदि इंडियन ओशन डायपोल रो पॉजिटिव फेज चली छी दैट विल यील्ड गुड रेन ओवर इंडिया इंडिया रे कोन हबो गुड रेन हबो चांस मन को दैट विल हैव द गुड रेनफॉल और मानसून if negative phase chali chi if negative phase that means will have India will have deficit rainfall or the less rainfall that's the fine so let's move on question number 6 One second, sir. I'll try to explain koribe. Hello. Indian Ocean dipole data phase thai that means we will have the two poles of Indian Ocean. One pole is the western part is the one pole and the eastern part is another pole. This would be the eastern part. This is pole number 1 and this is the pole number 2. You may take this one is the 1 and this one is the 2 pole. That means the end Indian Ocean. This would is the western part and this one is the eastern part. Fine. Okay. Aku kuaje dipole or the dual pole. Now कौन करिबा जदि वेस्टर्न पार्ट रे टेम्परेचर मोर अछि लेट्स से the western part of Indian Ocean having more temperature that would be termed as a positive phase जदि छि less temperature छि ताले हम ताको कहबा negative phase fine positive phase रे अधिक रेनफॉल हो इंडिया रे मानसून गुड रेनफॉल हो नेगेटिव फेज रे इंडिया रे कम रेनफॉल हो so let's move on to the next question is Thank you, sir. welcome next question is what El Nino. Now you have to try the answer. Questions दिया इसे तुमको ये cold ocean eastern Pacific ocean रे देखा जिवो cold current Indian ocean रे देखा जिवो warm current Indian ocean रे देखा जिवो warm current eastern Pacific ocean रे देखा जिवो which one is the correct? Option D, D. sir. Option D. Option D, sir. Funding. D, sir. Let's other two try as well. So option D. So, Option D. Okay. So that means this would be your South America coast Jodi. If the Southern America coast, particularly I said the Peru Chile coast having warm current in the month of what? December.
ध्यान से मन रखो इन द मंथ ऑफ डिसेंबर पुनी तुम भाबियोनी कि समर सीजन चलची इन द मंथ ऑफ डिसेंबर है ना जदि डिसेंबर मंथ रे चलीची है ना डिसेंबर मंथ रे मतलब किछि ठीक ठाक आसी किछि डिस्टर्ब तो होनो काकू एवरीवन इज फाइन sir. ओके मतलब मो वॉइस ठीक ठाक आसुची ना समस्त को No, एवरीवन sir. फाइन ओके सो एलिनो कोन दैट मींस एलिनो होचे कोन हमरो now warm ocean current which flows in the month of December to March again I repeat in the month of December to March ताकू summer बोली भाबिबनी winter season रे जदी warm current flows करूची पेरुचिले coast रे that would be termed as the what El Nino so this is correct this one is the correct El Nino को आउ कोन को आजे सुद्र कोन को आजे फटाफट कह दियो this is also known as the child of Christ this is also known as child of Christ Child of Christ. December 25th रे देखा जाए this is around 23rd to 25th of December ये तुमको देखा जो Pacific Ocean रे this is all about the El Nino now what would be the impact of El Nino over Indian monsoon रे El Nino हेले जदी if it's going to be the El Nino year that means what will happens India will have deficit rainfall ना कोनो ना बुझा पड़िबनी India will have deficit rainfall if we are having La Nina we'll have surplus rainfall done everyone okay now काको बुझा पड़िबनी El Nino एलिनो को कह क्राइस्ट ऑफ चाइल्ड कौन पे कह क्राइस्ट ऑफ चाइल्ड बिकॉज डिसेंबर मंथ रे देखा जाए आ डिसेंबर 25 समस्त जानिछो कौन पे फेमस क्रिश्चियन मन को पई जो सेलिब्रेट करंती से माने बड़ दिन सो दैट इज व्हाई आको कह चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट बोली कह आ लालिना को कह सिस्टर ऑफ दैट इज द चाइल्ड मतलब व्हाट क्राइस्ट जा भी Christ. है ना तो होप एबे एलिनो लालिनो हे जो तुम मन करो प्रीलिम पे आराम से कवर करतो आमे काना मु एबे एलिनो फॉर्मेशन डिस्कस करि परिबिनी this is matlab this much of information is enough to solve the question La Nina that is opposite to the El Nino try your you will try La Nina is a what a cold current eastern Pacific ocean रे warm a cold current Indian ocean रे ये प्रथम कथा देखो ये दुईटा देखला माने कैंसिल करबो कारण एलिनो लालिनो इज ए फेनोमेना व्हिच एसोसिएटेड विथ द पैसिफिक ओशन तो इंडियन ओशन देखला माने कैंसिल अटलांटिक ओशन देखला माने कैंसिल ओनली पैसिफिक ओशन इज गोइंग टू बी है ना ना बुझा पड़िबनी ट्रिक कोन एलिनो लालिनो they are the phenomena of Pacific Ocean they are not associated with the Indian Ocean or the Atlantic Ocean so whenever you are getting or coming across the option like Indian Ocean Atlantic Ocean so cross them there itself then move on and try to that means we are having two options this one and this one A and D जदि हमें एलिनो देखले वार्म करंट त उल्टाटा हबो ना कोल्ड करंट एंड सेम जगह रे प्लेस वुड बी सेम दैट वुड बी कोल्ड करंट देखा जिवो so that would be La Nina ना इथे आउ काको किछि डाउट अछि पचारिबारो anyone is having doubt and during the हां को No, sir. Clear है sir. ठीक अछि and during the La Nina what will happen there would be surplus rain or the rainfall monsoonal rain that is the what I would say the monsoonal rain in India will be pretty good or more that means बहुत सारा हमको monsoon देखा जिवो है ना ठीक ठाक monsoon देखा जिवो एक मिनट है ना so this is all about the La Nina so El Nino La Nina what they are the sea surface temperature or they are what southern आमे कहबा जो साउथ अमेरिका कोस्ट रे जो वाटर रो चेंजेस होची सेटा फ्रॉम पीरियड टू तो El Nino La Nina केबे 2 to 7 इयर्स रे प्रत्येक अल्टरनेटिव इयर्स रे एटा हे जाय ना कम टू द नेक्स्ट वन वाकर सर्कुलेशन काकू डिफिकल्ट लागु छै एमसीक्यू एनीवन काकू डिफिकल्ट लागु छै how many of you facing difficult Sir, the atmospheric circulation. try everyone Walker circulation कौन B. atmospheric circulation over Pacific Ocean this is B. answer B. B atmospheric circulation now Walker circulation what atmospheric circulation let's say if I draw like southern Pacific Ocean here would be your Australia this side is your South America ये रहबो तमरो ऑसिस that is Australia ये रहबो large Pacific Ocean 2/3 of the total surface of earth है ना एठी कोन होबे जदी wind circulation फटाफट देखिबो एबे मु तो पूरा मेकानिज्म बुझाई परिबेनी टाइम लागिवो तो मु एबे कोन करछि देखो let's say here is the low pressure normal time रे ठी low pressure थाए जदी this region is having
warm water and this season is having cold water, एठी जदि cold water हेबा को कोन कहबा लाली ना ना बुझा पड़िबनी आउटे पूर्व हम डिस्कस करले ना जस्ट ए few minutes ago है ना. So let's say what will happen here, low pressure the air will convect off, then upper atmosphere will have high pressure, air will diverge and here would be upper atmospheric low pressure, air will descend, again air will flow like this type of circulation of Pacific Ocean circulation को कहा वाकर circulation, because वाकर आपको आइडेंटिफाई करथिले कि एमिति किछि सर्कुलेशन होउछि बोली. तो ये वाकर सर्कुलेशन दी टाइप रही पारे, either that could be the positive circulation or normal circulation or negative or abnormal. Either it would be abnormal or normal. तुम कहबो normal circulation कोन, that would be during the time of La Nina. La Nina रे कोन देखितले एठी cold water हेबो, एठी देखो cold water लिखिछि. जदि मु आपको चेंज कर देबी that would be abnormal circulation of वाकर सर्कुलेशन रो abnormal. साधारणतः ये ऑप्शनल रे पढ़ा जाय, बट मु तुमको जेहेतु ओशनोग्राफी मु कवर करूछि, सो माय टारगेट इज दैट टू एटलीस्ट you should मतलब increase your awareness about this type of मतलब topic, so that post case रे जदि भी क्वेश्चन आसिला at least you can handle that question. Jadio I know कि many of you are not aware of these topics, but those who are having geography optional and if you have cover here and there. Now comes to the Elina Moduki. So then try your best. This is a low pressure in the western Pacific Ocean, low pressure eastern Pacific Ocean, low pressure in middle and southern. Which one of the following is correct? It's the middle. M Muduki मतलब middle. आउ एलिनो आमे कोन जानछे, एलिनो टा गोटे होची वार्म वाटर ना. एलिनो कोन पढथिले वार्म वाटर अर्थ कोन लो प्रेशर ना बुझा पड़िबनी. वार्म अर्थ कोन लो प्रेशर ना कोन कहजो अरे कि जे कोन होइला चुपचाप हेगला सब. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So that means what? Low pressure. And let's say Pacific Ocean, if I draw Pacific Ocean like this and here is the Australia, जति ध्यान से मन को if condition satisfy हेले हबो, जति एठी तमरो warm water रहिला, एठी cold water रहिला, ताले ताको हम कोन कहबा एलिनो. और ए warm water टा जदि एठी के आसेला दी पट साइड रे cold रहिला Pacific Ocean रो, ताले आपको कहबा दीटा सेल डिवाइड हे जबो. जो गोटिए सेल थिला ना एबे दीटा सेल हे जबो. हमें गोटे वाकर सेल देखिथिले ना एमते बड सेल थिला, सेटा दीटा सेल रे छोट छोट सेल रे कन्वर्ट हे जबो. ई भले सिस्टम को कहा जे एलिनो मुडुकी. ना बुझा पड़िबनी एबे. ठीक Yes, है sir. फाइन. Yes, sir. लेट्स मूव ऑन. तो मु जानि छी जो माने ज्योग्राफी ऑप्शनल टिके डिफिकल्ट हबो, और दोज हु हैव गॉन थ्रू दिस इज प्रीटी गुड. During which time more tropical cyclone forms in Arabian Sea? This is also a very good question. You can try it. The negative phase of Indian Ocean Dipole, when I say IOD, Indian Ocean Dipole, recently we have discussed करिचे. Now this is the condition. एबे एलिनो लालिनो सहित तमने एलिना एंड लालिनो सहित acquainted हेगला, positive negative phase सहित acquainted, ए सब already discuss करि सारिचे. Now you have to try your answer. Okay, during which time more tropical cyclone forms in Arabian Sea? That would be the El Nino. Sir, positive. So it would be El Nino. Positive IODC. So D, answer would be D. The answer man rakho Arabian Sea jetro tomorrow lalina. Acha, for example, let's say last year how many tropical cyclone form in Bay of Bengal? If you recall rightly, at least 2 or 3, at least 3. Some of them didn't convert into cyclone, actual cyclone. Last 2 to 3 years, let's say I will talk about in the last 3 years, at least 2-3 cyclones hit in the eastern part of India, like Amphan, Amphan, Koni, बाद रे छोटे छोटे भी स्ट्राइक करी छी है ना. तो ये सब कोन पे, दैट मींस लास्ट 2 इयर्स कोन चली छी लालिना ईयर चली छी वर्तमान. तो जेते लालिना ईयर चलथे और बे ऑफ बंगाल नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अधिका फॉर्मेशन हुए. बस एते की खाली तुमको मन कर छी. आज जेते एलिनो ईयर चलीबो अरेबियन सी रो अधिक रखो, ताले एबे देखो अरेबियन सी रो अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होची कि होनी ना. जो वर्ष सुनिबो अरेबियन सी रो अधिक होची, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एलिनो ईयर्स. डन. Let's move on. Next question. Difficult लाउची masculine high.
What is this? The next question is masculine high. ये कौन? Sir, at a low pressure area. It's a low pressure. Option is high pressure. It's a warm current. It's a low pressure. It's a cold current. Which one of the following? Everyone. Low pressure area. बाकी मैंने try करो. It's the high pressure area. एठी लिखा है जी high. पुनी low केमती कहूचो? एठी कौन लिखा है जी? Masculine high लिखा ही नहीं. फिर भी let's say you are not aware of the topic. जनरल सेंस से टिके यूज करो. एठी लिखा है जी masculine high. High means high अर्थ altitude नुआ. Here high means what? Cold, the temperature, high the pressure. ना बुझा पड़िबनी. So that means it's a high pressure. तो एटा कौन? ताले एठी कौन देखा? That means it's a high pressure area ना. ना बुझा पड़िबनी. It's a high pressure area. Done everyone? ना बुझा Yes, पड़िबनी. sir. ये कोठी देखा जाए masculine high? Anyone? एठी रे Somalia coast. ये रे तुम कोठी Madagascar and Madagascar ठीक Madagascar eastern side रे. That is the eastern side of Madagascar. This region will have masculine high. What is the role of masculine high for the Indian Ocean? More the masculine high, more the monsoon. Again I repeat, masculine high pressure mute कर दिया जेतेबेले तुम question answer दउछो. Otherwise you have to ask any kind of question to me. That time you can unmute. Otherwise unwanted जो noise आसीबो ना recorded video सुनिले तुमको विरक्ति लागिबो. बुझि परछ ना प्रॉब्लम है ना. तो टिके सेथरे कोऑपरेट करिवो. ठीक अछि. अदरवाइज जेतेबेले तुम वीडियो देखुछो ना जदि तुम चाहो अनम्यूट करि रखिया पई यू हैव टू इन ए साइलेंट रूम. ठीक अछि. सो ये रहबो तुमको. सो लाइक दिस. सो दैट मींस ए हाई प्रेशर. ए तुमरो ठीक माडागास्कर ईस्टर्न साइड देखा जो गोटे हाई प्रेशर. इंडिया रे कोन करे जदि एठी हाई प्रेशर अधिक रहबो मानसून टा हमरो गुड मानसून होबो. कारण हाई प्रेशर जते स्ट्रांग होबो मानसून सेते बढ़िया होबो है ना. कारण प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ी बढ़ी जीवो. होप एवरीवन comfortable with this? Yes, sir. Let's move on. Next, longest range in the world. कारण Entrance. आमे कोन देखुची D. oceanography. Peruchili. Peruchili. Peru Chile, sir. So answer is Peru Chile. Mariana होची deepest. आपको भूल काई गेला. Deepest and longest सेम नो ना. शक्ति बुझा पड़छ ना बुझा पड़ो. Sir. Sir. तो this would be the longest. तो Peru Chile trench कोठी होची साउथ अमेरिका रे पूरा एठी देखियो Peru Chile trench the longest range. Done everyone. Trench रो मीनिंग आउट के पूर्व बुझाई देछि और देखि भी देछि ट्रेंच केमते फॉर्मेशन होची एंड द ट्रेंच रो पिक्चर भी देखाई देछि बॉटम टोपोग्राफी रे. होप एवरीवन इज क्लियर विथ दैट. डन एवरीवन. Yes, sir. अरे ठीक ठाक लागुची समस्त को ना काको मतलब डिफरेंट लागुची फीलिंग लाइक लो. एनीवन? डोंट वरी एबे फील लो कले ठीक अछि बट किछि सिखुछो ना और सेतेबेले जाकी एबेले क्वेश्चन कोन करिवो बुझि परछ ना. तनु करके एबे लो भाबी कि तुम कहबे ना हम पढिबेनी. दैट्स योर मतलब इसमें आपका मतलब नुकसान ही होगा. जो भी है which of the following is not feature of the mid oceanic ridge? This is a top question. I know that many of you those who are having geography optional they would be able to solve this question. Otherwise it's a difficult one I know, but try करि परिबो तमे. You can try. You can use your mid oceanic ridge मु तुमको देखै छी और टिके पूर्वरु what how they looks like. Let's say I will here you can see the mid oceanic ridge how they looks like. Destructive. It's a B. shallow focused earthquake. Option C, shallow Shallow focus focus. earthquake. B, sir. B, sir. Option C, So it could be this is answer B. ये destructive zone हुआ ये constructive zone. अरे कौन हो गला भूल कहीं केला ये constructive zone. Here what? एठी तमे देखो here volcanic eruption is constantly taking place and the new rock is forming. तो आकु कोन कहजवा एठी जे रीच सो फॉर्मेशन होची these are the new rock. तो आकु कोन कहबा constructive zone. Destructive zone होची ये एठी रॉक टा कोन होची डिस्ट्रक्ट होची मतलब सबडक्शन होची ना बुझा पड़िबन काकू ना कोन हिला भूल एला कोन पई ना बुझा पड़ो नहीं. ठीक अछि ना कोन कहू अरे किछि डाउट अछि जे को कार कि काहे कि डिस्ट्रक्टिव काहे कि कंस्ट्रक्टिव. So सीटा टिके क्लैरिटी आसुनी. सी र क्लैरिटी किछि दरकार नै. एठी कोन कहछि नॉट को हाई छिबा तुमको. तो इट इज शैलो फोकस अर्थक्वेक देखाई जिवो. एठी डीप फोकस अर्थक्वेक केमते देखा जिवो. लेट्स से फॉर एग्जांपल मिड ओशन अर्थ रो पिक्चर ड्रा करूची. आई विल ड्रा है ना.
So just have it, मतलब देखो, here is the plate subducting and this is the basin, ये रहबो मिड ओशनिक रीच एमती रहउची। तले ये मिड ओशनिक रीच कने एटा हमर कोन डिस्ट्रक्शन पॉइंट रहबो, सबडक्शन एटी कोन रहबो सबडक्शन। तले ये सबडक्शन जोन को कोन कहबा डिस्ट्रक्शन पॉइंट। हियर volcanic eruption is constantly taking place, तो ये volcanic eruption द फोकस वुड बी क्लोज टू द प्लेट ना बुझा पड़िबनी, सुदरे बुझा पड़िबो तो फोकस ଆଜ୍ଞା sir। क्लोज टू द बोर्ड। तले एटा कोन रहबो शैलो फोकस रहबो, तले तो ठीक हे गेला, डीप फोकस केमती हबो। तले मु कहिछि ना कोन गलत कोन, तो गलत would be this one, ये constructive, here volcanic eruption constantly taking place, new rock is being formed ना बुझा पड़िबनी। ଆଜ୍ଞା sir। होप बुझा पड़िबो समस्त को। एक मिनट, everyone fine with this ना काको डिफिकल्ट लागुची, those who are the newcomers तमन टिके डिफिकल्ट लागि पारो, अदरवाइज जदि तमे पढिछो बहुत बढ़िया कथा है ना। तो एमती पूरा ज्योग्राफी कवर करबी आफ्टर तमरो के वी आर हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो थे एमती डिस्कस करबा। मु तुमको कहितले कि आई प्रॉमिस्ड यू के मोर देन 3000 एमसीक्यू डिस्कस करबी, बट नाउ वी हैव अपग्रेडेड द प्लान अप टू 10000 एमसीक्यू डिस्कस करा जिवो तमरो है ना। एंड अप टू प्रीलिम जाई चलिबो जो थे कि अदर फैकल्टी वुड बी एसोसिएटेड विथ यू, दे विल हैव आल्सो स्पेंड टाइम, से माने भी क्वालिटी एमसीक्यू दिया जिवो तुमको। एंड it's my promise कि I will definitely give you always the quality product है ना। तो ये दिया जीवो सेम मनी तुमको एक्स्ट्रा चार्जेस किछि निया हबनी, सेम 500 रुपीस रे more MCQ will be given and more faculties will be associated. Let's say I will cover your geography cover कली, जणे आसिला हिस्ट्री कवर कले, जणे जनरल साइंस कवर करिवो, जणे साइंस टे कवर करिवो, सो दैट इट वुड बी ए मतलब बहुत ब्रॉड कवर हे परिवो एंड भलो रे कवर हे परिवो, ठीक अछि। तो सेटा तो डोंट वरी फॉर दैट, बट यू विल हैव द accessibility everyone, सेम मनी काको अधिक पेमेंट करिया पड़िबनी, ओनली एनहांसमेंट हे जिवो तुमरो, ठीक अछि। तो नेक्स्ट, लापाम इज अंडर व्हिच कंट्री, ये न्यूज़ रे थिला। स्पेन sir। ये लापाम कोन प्रोविंस रे थिला, व्हाई इट वाज volcano ତା ଇରପ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇ ନଥିଲା କି ତାର ସେ ଯୋଉ କମ୍ବ୍ରିଜ ହେଇକି ଭଲକାନଟା। so this is that means an active zone ए कोठी अछि लापाम, अटलांटिक ओशन कोठी कैनरी आइलैंड पाखरे, कोठी कैनरी आइलैंड माने कोठी अछि कैनरी आइलैंड एवरीवन जानना कैन बहुत थोड़ा पढ़ी हमें, एटलिस्ट तुम जे खाली वीडियोस को थोड़े देखि देबो और माइंडफुली पढ़िबो ना, खाली हेथरे भी कवर हे जबो कने ये सब हमें कैनरी आइलैंड पाखरे को क्वाड्रेंट देखा जाय, कोल्ड करंट माने अछि ना, कोल्ड करंट देखा जाय अटलांटिक ओशन रे कैनरी आइलैंड पाखरे कैनरी कोल्ड है ना। यस सर। which one which is incorrect about टोंगा वोल्केनो, ये भी न्यूज़ रे थिला। तो दैट मीन्स तुम देखि परियो जो ओशोनोग्राफी हम एमसीक्यू कवर करू छे एथरे किछि करंट भी अछि और बेसिक भी अछि है ना। तो टोंगा वोल्केनो न्यूज़ रे थिला, एबे मते को एटा इनकरेक्ट कोटा, एटिके ऑप्शन सेट डिफिकल्ट करा दैछि। So that would be the D. Answer is what? ସଦर्न पैसिफिक ओशन। ये न्यूजीलैंड पाखरे देखा जाए ना, न्यूजीलैंड पाखरे अछि कोन कार्माटेक ट्रेंच, कार्माटेक ट्रेंच न्यूजीलैंड पाखरे अछि देखि तो फटाफट मु तुमको कहछि, यू मस्ट हैव ए what that is the map beside you so that you can look out that one as well. तो देखि तो कार्माटेक ट्रेंच is there, so there itself and your what Tonga volcano is coming. Move on to the Senkaku Island. Senkaku Island is a disputed island between which two nations? Option 1. चाइना। Very good. So answer is Japan and China. Senkaku Island कोठी अछि? East China Sea. कोठी अछि? East China Sea. East China Sea समस्त बुझी परिबो everyone? Everyone East China Sea देखो एमती अछि जापान, एठी अछि जापान तमरो एरो चाइना, एठी कोरिया रहला ए जो जगहटा,
एठी तमरो वियतनाम रहिला एपटे हमकु इंडोनेशिया ई सब रहइबो एटा साउथ चाइना एटा रहला ईस्ट चाइना कहले जापान जो अछि हमरो जापान और चाइना भीतर जो अछि सेटा रहला ईस्ट चाइना साउथ चाइना टा एपटे चाइना रो साउथ रहिबो ना बुझा पड़बो नेबे है ना डन ना कोन कहउछो हे परिबो ना Yes, sir. Yes, sir. तो ओके अच्छा एठी जदी मु टिके ईस्ट चाइना चू को टिके मैपिंग कर देबी जदी लेट्स से मु मैपिंग कर दोची ईस्ट चाइना सी आगे मु टिके मैप ड्रा कर दे कि एठी तुमको एमती आइलैंड सब अछि जापान एठी कोरिया अछि जंचो कोरियन एपट अछि अलास्का एटा अछि हमर बेरिंग स्ट्रेट एठी ओखोटसी ना बुझा पड़िबनी बेरिंग स्ट्रेट ए अलास्का रहिबो एटा बा तमर रशिया ए रहबो चाइना एटा रहबो हमर ईस्ट चाइना सी एठी की अछि ईस्ट चाइना सी रे मने पकाओ की अछि जहाँ से तो सबले एठी कोन अछि तमरो जो छोटेटा टाइपे कैपिटल ताइवान 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 पाखरे ताइवान स्ट्रेट अछि तार कैपिटल ताइपे अछि ए रहला ईस्ट चाइना सी रे एठी अछि ए रहबो तमरो जापान जापान चारटा आइलैंड को नेकी अछि एमती 4 आइलैंड को नेकी जापान अछि तो ईस्ट चाइना सी रे आसीबो हमरो सेंकाकू आइलैंड तापरे सो साउथ चाइना सी तळे रहइबो साउथ चाइना सी है ना सो एबे हम देखिबा अनक्लोज अनक्लोज कोन समस्त जानिचो इंटरनेशनल सी लॉज अनक्लोज कोन इंटरनेशनल सी लॉज है ना आमे सकाळे कोन देखितले इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी कोठी अछि हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका Jamaica. जमैका पॉलीमेटालिक नोडुल्स हमें देखितले नाम माने पडोनी आगे ई सर कोन पॉलीमेटालिक नोडुल्स कोन सकाळे पढा हैतला Plastic गुड़ा लगी सब उसे जो सर्कस उसे रे हां प्लास्टिक केतळ कहली मु पॉलीमेटालिक नोडुल्स एतळ सर एटा जो कहला डिफरेंट मिनरल्स रे बको हैतला मैंगनीज आयरन कोबाल्ट एसो को हैतला सेटा सर्गास उसी कथा तमे कहउचो हाँ सर्कस उसे ना Sir, बुझा I पड़ो कौन सा manganese का foundation? पॉलीमेटालिक नूडल्स से सबटु अधिक कोन थाए मंगनीज बहुत बढ़िया इंडियन ओशन रे सबटु अधिक कोन मिनरल्स देखा जाए मंगनीज मैंगनीज एबे ताले आंसर so answer this question according to UNCLOS sovereignty of a nation in water extend to how much nautical miles option 1 24 12 200 option D is 20 Sir, सर 12. 12 এটা আসিফ না question. 12 answer is what 12 12 তাহলে কেতে থাই আমরো এ তোমাকে পড়া হইছি 12 12 200 না মনে পড়ুনি প্রথমে 12 তারপরে 12 তারপরে 200 এ তোমার কোন EEZ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক है ना तो प्रथम रो बेस लाइन रु 12 नॉटिकल माइल होची योर सॉवरेनिटी तापर एसो कॉन्टिग्युअस जोन ये रहबो तुम्हार कोन ये रहबो टेरिटोरियल वाटर ये कोन रहबो टेरिटोरियल वाटर तापर एसो कॉन्टिग्युअस जोन तापर एसो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना माने पडो नेटा सर डन एवरीवन है ना बेस लाइन रु निया जबो कोटो बेस लाइन लेट्स से बेस लाइन पछपटी जो वाटर रहबो सेवन को कोन कुआ जबो इंटरनल वाटर दैट कुड बी इंटरनल वाटर ना माने पडोनी लेट्स से मु इंडिया मैप ड्रा करूची एंड एठी गोटे चिलिका एमती अछि एटा रहला बेस लाइन तो बेस लाइन पछपटे जो वाटर रहबो ना दैट कुड बी इंटरनल वाटर तापर जो 12 नॉटिकल माइल रहबे एटा रहबो टेरिटोरियल ना बुझा पडिबोनी टेरिटोरियल तापर रहबो तमरो कॉन्टिग्युअस तापर रहबो ईजेड डन ये रहबो तमरो अनक्लोज लॉ नेक्स्ट तो जीवा में नेक्स्ट को होप ताले इंडिया पाखरे इंडिया रो कोस्टल लाइन केते फटाफट कह दियो हाउ मच कोस्टल लाइन वेयर 7500 560 7561 केते 7561 okay so this Yes, is sir. that means we are having pretty good EEZ है ना नेक्स्ट वन अच्छा जदि एटी गोटे सिंपल क्वेश्चन पचारि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को किए गार्ड करे वेदर इट्स नेवी और कोस्टल गार्ड किए जगे कोस्टल Coastal guard. ताल किए जगिवो सर कोस्टल गार्ड
ताले तुमरो कोस्ट गार्ड है ना कोस्ट गार्ड रो काम होची पोल्यूशन को चेक करिबा माइग्रेंट की आसुची ताकू देखिबा कोन से इलीगल काम होची ताकू चेक करिबा डिजास्टर पर किछि आसुची नेवी रो काम अलगा बुझि परछ नेवी रो काम होला डिफेंस रिलेटेड है ना ठीक अछि लाइक पुलिस बलिया काम करिबा बुझि परछ ना यारो काम होची जाबो नाउ व्हिच ocean is most polluted ocean Pacific Ocean. Yeah. Pacific Ocean. Pacific. Sir, Atlantic Ocean. Yes, sir. That is the Mediterranean Sea. because of what this is Atlantic Ocean answer would be here Atlantic Ocean ठीक मन रखो so it is factual है ना don't worry next one which state is formed dugong sanctuary recently Tamil Nadu. Tamil Nadu, sir. तमिलनाडु काना एटा करंट रूम उठेछि तो जेतरो ओशोनोग्राफी रे एमसीक्यू डिस्कस करछे किछि करंट भी रहबा दरकार ना डुगोंग इज व्हाट Sea cow. Sea cow, sir. Let's गोटे take out. मामल है ना ये गोटे मामल आ ये Mammal. हार्बिवोरस ना ओमनिवोरस Herbivore. हार्बिवोरस एनवायरनमेंट सब पढ़ाई छी है ना ना पढ़ाएंगे Yes, sir. ये कोन ग्रास ऊपर फीडिंग करंती सेई ग्रास कोन सेई ग्रास होची इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम ना बुझा पड़िबनी सेई Again, ग्रास sir. होची इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम है ना माने पको लेट्स मूव ऑन why western coast of india having more reserve of natural oil and gas ये क्वेश्चन भी डिस्कस करथिली सकाळे ना यू हैव टू आंसर मी Long continental slope. Long continental slope. Long. Submergent coast. Sir, kind of the basin, longest basin. ना ऑप्शन इज सब्सिडेंस को सब्सिडेंस हे परिबो नले लॉन्ग हे परिबो तो ऑब्वियसली हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप एठी कोन लिखे स्लोप लिखाई जिबा आ तुम आंसर केमति कहलो स्लोप बोली तो द आंसर वुड बी हियर मुसे भाबली अरे एठी कोन स्लोप लिखाई जे आंसर कहि देलो एटा जदी सेल्फ हेई थांता ताले हेई थांता ना बुझा पडुनी Again, sir. Yes, sir. सेथिबे मु क्लियर आंसर कोन एटा हे गेला कोन हे गेला मु सेथिबे मोटे टिके टाइम नेले मु देखे त कोन ए कोन कहू मु मुगले किछि पई तो मु लॉन्ग लिखिछि कोन पई मतलब मु आंसर सेमति नै मु क्वेश्चन सेट करिछि जे तो मु सेति में देखले मु क्लियर लॉन्ग लिखिबार किछि त रीजन थियो मोर सेति जानि को मु स्लो पार्ट करिछि एटा को ध्यान देइना तमे तले दिस वुड बी द आंसर ना बुझा पड़िबनी टिके ट्रिकी थिला है ना बुझा पड़िबनी Yes, sir. अरे एटा काकू डाउट हैला ना कोन ना बुझा पड़िबनी Yes, sir. है ना तो हमें सेल्फ देखु छे ना एटा देखो एठी देखेउची ये होची हमर कॉन्टिनेंटल सेल्फ अब तुम एठी माइनिंग करि परिबो तो अरे डेप्थ केते कहन छे तो 5 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ही पारे तो एठी केमति रहइबो तमरो एई जगह रे रहइबो ना डिपॉजिट ता तो सेल्फ हो ना स्लोप रे केमति होबो ना बुझा पड़िबनी Yes, sir. है ना डन ग्रैंड बैंक सकाळे डिस्कस करथिले कहि दियो फटाफट Yes, sir. Yes, sir. Asian, sir. Asian. कोठी अछि ग्रैंड Yes, बैंक Canada, sir. न्यू फाउंडलैंड Nepal. यूएसए पे कह रहे छे न्यू फाउंडलैंड अरे सकाळे कहितली बा एठी हाँ, कोन सर। करे अच्छा एटा टिके फटाफट कहि दो ग्रैंड बैंक रो फैसिलिटी कोन why this region is having more fish reason कोन सकाळ कहितली sir. Cold Cold Yeah, current. Uttarakhand. Uttarakhand. Cold current or warm. को कोल्ड करंट को वार्म करंट And fog. Gulf Stream is warm and Labrador cold मने पडुची Yes, sir. लेट्स से मु नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ करके देखै दउची एमती आसीबो एपटे जदी गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट एपटे आसुची कोल्ड ग्रीनलैंड रो वेस्टर्न साइड रो आसुची कोल्ड करंट है ना एपटे कोल्ड करंट आसुची द मीटिंग पॉइंट हियर वुड बी द न्यू फाउंडलैंड दिस इज द ग्रैंड बैंक तल डगर बैंक उठी अछि सकाल डिस्कस करथली फटाफट कहि दियो अरे नॉर्थ सी रे कहितली ना सकाल डिस्कस कर नथले नॉर्थ सी Yes, sir. North Sea.
the largest coral area? Australia. 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 Australia कौन पे? Which coral reef is there for Barren which? Island. Barren Island. Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Barren. Great Barrier Reef. Great Barrier Reef is a UNESCO heritage site. True or false? True, sir. True, sir. Yes, sir. Yes, sir. Length केते? Length तारो केते? 2000 kilometer. Almost Approx. approx 2000 kilometer or 1900 something तमे कोई परिवो है ना. Great Barrier Reef is a barrier type of reef. Australia मैप draw कर दूची फटाफट. Australia रो 8 अछि तमर Great Barrier Reef and this is a coral sea. ये एरिया रो ना कोनो coral sea. ताले एठी को प्रोविंस अछि? क्वींसलैंड. ए को थे? Queensland. ताले एटा मन रखिबो कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया रो केतेटा प्रोविंस अछि? हमनी 1 2 3 4 5 6 टोटल केतेटा प्रोविंस ऑस्ट्रेलिया रो? 6. Tasmania. हां तास्मानिया छोटेटा रहिछि सॉरी. तो दिस वुड बी 7. सो फर्स्ट वन इज क्वींसलैंड. एटा होछि क्वींसलैंड. तापरे एसो तमरो न्यू साउथ वेल्स, तापरे विक्टोरिया तळ, तापरे ए रहबो तमरो तास्मानिया, तापरे साउथ नॉर्थ वेस्ट आ कोन South. ना बुझा पड़िबनी कागो है ना. सिद्रा को बुझा पड़छ ना बुझा पड़बनी? आगे सर बुझा बुझा पड़छ राजश्री कोन हेला? अरे मैपिंग करैथली बा तुम मनकु समस्त को कोन कहउछ? शक्ति कोन हेला? हाँ, sir. सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू व्हाट? अच्छा इथरे आउ किछि डाउट अछि कि कोरल्स रे? ना सर. है ना. सर एटा कोन हाँ, टाइप sir. रो ऑस्ट्रेलिया देखाउची सेटा फ्रिंज. Barrier. अगेन आई रिपीट ऑस्ट्रेलिया रो कोठी देखा जाय ये होची एरिया जाको कहे क्वींसलैंड. आको कहे कोन? क्वींसलैंड. क्वींसलैंड पाखरे अछि कोन? कोरल सी. कोरल सी रे अछि कि ग्रेट बैरियर रीफ. कोरल केते टाइप रो थाए? कोरल्स केते टाइप रो थाए? साधारणतः तीन प्रकार. वन वुड बी बैरियर, one would be atolls, one would be fringe. तो फ्रिंज कहले अटैच हेकी रहबो. फॉर एग्जांपल लेट्स से गोटे आइलैंड एमति अटैच हेकी रहले कोरल ताको कह जे फ्रिंज, दूर रे रहले ताको कह जे बैरियर और चारि पटे रहले ताको कह जे एटॉल. ना बुझा पड़बन? सर्कुलर फॉर्म रे रहले ताको कह जे एटॉल्स. तो कोरल्स साधारणतः तीन प्रकार एतिके मन रखो. कोरल्स आर व्हाट? दे आर द टाइनी, दे आर व्हाट? टाइनी एनिमल्स जाको कह जे पॉलिप्स. जाको कोन कह जे पॉलिप्स. ना बुझा पड़बनी? यस सर. Yes, sir. जे पॉलिप्स बोली कोरल पॉलिप्स से माने एनिमल्स. ध्यान से मन रखबो कोरल्स गोटे लाइम सिक्रेटिंग एनिमल्स. बहुत ही टाइनी मिलियन बिलियंस ऑफ कोरल्स देखा जाए. ए माने सिम्बायोटिक रिलेशन कहा सहित मिसिक रहंती? Algae. एल्गी. एल्गी सहित के सिम्बायोटिक रिलेशन बा पॉजिटिव रिलेशन रे थांती. ये लाइम सिक्रेट करे. कोरल कोन करे? लाइम सिक्रेट करे है ना. ये कोन करे? कॉलोनी बनाए. कहा पई? एल्गी पई. एल्गी कोन करिवो? आपई फूड बनेइबो. ता पई कोन करिवो? फूड बनेइबो. सो एल्गी रो काम होला फोटोसिंथेसिस करिकी थ्रू द तांकर कोन थाए? ग्रीन पिगमेंट थाए. विथ द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे विल प्रोड्यूस द फूड एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर. एल्गी कोन? प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम है ना. ता द्वारा कोन करिवो? फूड बनेइबो. आउ ये तो कोरल कोन करिवो? ताकू होम मतलब हाउस दबो. होम. सो दैट दीज जण सिम्बायोटिक रिलेशन रे कॉलोनी करिके थांती है ना. ना बुझा पड़िबनी? टाइप्स केते हम कहले 3 टाइप्स है ना. ना बुझा पड़िबनी काकू? डन एवरीवन? कोरल्स यस सर. नेक्स्ट वन जिबा में सबसिडेंस थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हाट? आइलैंड फॉर्मेशन, कोरल फॉर्मेशन, वोल्केनो एंड प्रेसिपिटेशन. Island Island formation. formation. कोरल फॉर्मेशन. So answer is what? Coral formation. Subsidence theory is related to what? Coral formation. है ना. Given by whom? Darwin. Given by Darwin. Again I repeat. Subsidence theory is related to whom? That is related to coral. Given by Darwin. ये बड़ा क्वेश्चन ओपीएससी रे पचारुची. डायरेक्ट थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आसुची. सेते पे मु तुमको थ्योरी रू भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करिबी एंड दैट वुड बी मोस्ट इंपैक्टेड रहिबो है ना. ये तुमको रहिबो. एबे मतलब किए ज्वाइन कर लिए सूरज पंडा. सो यू आर प्रीटी लेट
मतलब 8 PM it was the scheduled time. So जब भी हो मतलब देर से ही आए तो है ना. Subsidence theory is related to what? That is the coral formation. So that was given by whom? Darwin. Given by Darwin related to coral. तमें कभी कौन है subsidence theory? Let me explain a little bit about the subsidence theory. For example, let's say I'm having ocean. गोटे ocean अच्छी. तो ocean एमती let's say एटा गोटे ocean अच्छी. Number of island will be there. Island रो height धीरे धीरे कमे. यदि height धीरे धीरे कमे ताको कहा जाए subsidence. तो let's say this is on your island and the height is decreasing. एमती देखो धीरे धीरे height कमुचे आपको कहा जाए subsidence. ना जितना height कमिबो, let's say the corals are attached to this particular island and the water level is given like this. है ना. ये कोरोल कौन करिवो जेते बेले आइलैंड सबमर्ज करूची और सबसाइड करूची कोरोल चाहेबो तार ठीक हाइट को मेंटेन करिया पे से सेतर ऊपर को मूव करिवो. आइलैंड जेते तळ को जिवो कोरोल सेप्ती के ऊपर को जिवो कारण से चाहेबो निजर डेप्थ को इक्वल मेंटेन करिया पे ना एटा बुझा पड़िबोनी. लेट्स से एठी थिला तमरो एटा वाटर लेवल एटा को नै गेली मु वाटर लेवल कोरोल एठी अछि ए आइलैंड कोन हिला सबमर्ज करके ए जाय आसी गेला तो कोरोल किंतु एठी ही रहइबो ए पर्टिकुलर से सेति जाय उठी जिवो निजर डेप्थ को सबले मेंटेन करिवो एई भले आकु कहै जे सबसिडेंस थ्योरी गिवन बाय डार्विन. ना बुझा पड़िबोनी काकू. डन एवरीवन. Yes, sir. Okay, subsidence theory given by Darwin related to coral. Okay, ए भले क्वेश्चन आसुची आजिकली. नेक्स्ट, which coral not found in India? Option 1, Snowflakes. barrier, fringe, snowflakes. The berry. Barrier, sir. So it's a barrier. Barriers. Snowflakes coral कोठी देखा जाए मालाबार कोस्ट. तुमको स्नोफ्लेक्स कोरल कोन ये तो समस्त पाई नुआ थिबो मेनी ऑफ यू मतलब बहुत सारा लोगों को नुआ एटा है ना. कि स्नोफ्लेक्स कोरल कोन. स्नोफ्लेक्स कोरल इज अ टाइप ऑफ दिस इज इनवाजिव. ये गोटे इनवाजिव स्पीसीज टा है ना. ये पता नहीं ये कैरिबियन सी रु आसी बोली बिलीव करा जाए. इट्स कमिंग फ्रॉम कैरिबियन सी थ्रू द ब्लैक एंड वाटर. तुम पुनी कहबो ब्लैक एंड वाटर कोन. ब्लैक एंड वाटर कहले जो सीप बड़ बड़ सीप थाए ना ये मैंने कौन कहते वाटर इनटेक करते निज को बैलेंस करने से वाटर को कहा जाए ब्लैक एंड वाटर बोली कहा जाए है ना. तो ब्लैक एंड वाटर कौन लेट्स से गोटे सीप 100 और मिलियन टन्स नहीं जाऊँगी तार गुड्स एंड सर्विस नहीं गला से कौन कला अमेरिका रे अनलोड करला जेतरो से अनलोड करिवो ना ताको किछि वेट दरकार निजर बैलेंस को मेंटेन करते से वाटर नहीं जाए समुद्र रो है ना. सो दैट निजर वेट को कारण तुम जानछो सीप ऊपर जेतिके देखा दे तळे तार 2/3 बुडी की थाए है ना नॉलेज से बैलेंस हरई दबो से से वाटर सी रु नहीं जानती. तो सही समय जो वाटर नहीं ताको कहा जाए ब्लैक एंड वाटर. से वाटर रे किछि स्पीसीज भी पळे आसीबो ताको आसीला पर लेट्स से मालाबार कोस्ट ताको आयरन अनलोड मतलब लोडिंग करिवो से वाटर को पुनी छाड़ी दबो ता द्वारा माल को आउथरे नबो ए भले वाटर को कहा जाए ब्लैक एंड वाटर. और ता द्वारा से स्पीसीज गुडा आसी जाए ना. बुझा पड़िबोनी काको. बुझा पड़िबो. Yes, sir. है ना. सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तुमको एमती मिली जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सो दैट तो सही थे आसी स्नोफ्लेक्स कोरल. ये कोरल कोन ये रेक्ट पार्टिकल्स ऊपर ग्रो करी जिवो मतलब कौन से गोटे भंगा रुजा पार्टिकल्स अछि दैट माइट बी योर प्लास्टिक हे परे दैट कुड बी द रेक्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सीप हे परे बोट हे परे एनीवेयर दैट कैन ग्रो. So that does not require any kind of sensitive that what I would say the condition which is required for the conventional growth of the coral or the conventional corals like the atol corals, barrier corals. So this kind of condition is not mandatory for the snowflakes corals. They can grow anywhere. कोठी भी grow कर जाए पारे. So they are invasive species है ना. तो ये फास्ट रेट रे ग्रो करे. ये थला तमरो स्नोफ्लेक्स कोरल. फ्रिंज कोरल तमे कोन करे फ्रिंज कहले कोन. Fringe means as I was talking about if that coral is attached to your island. Let's say ये गोटे तमरो सी अछि कोरल टा जदी अटैच हे कि अछि ना वॉल को और आई वुड से द लीम को अटैच हे कि अछि ताले एबा को जे फ्रिंज. बैरियर को ले अवे फ्रॉम द कोस्टल एटा ला कोस्ट तो तुमको एटा गोटे कोन लागून फॉर्मेशन हो. लेट्स से इफ आई आस्क कि इन व्हिच कोरल लागून विल फॉर्म एटॉल रे फॉर्मेशन हो बिल्कुल चारिपटे एमती रहबो मझिरे लागून फॉर्मेशन हो ना हबनी. and here also lagoon formation habo barrier re भी lagoon formation habo tale lagoon कोउथरे formation habo ni fringe रे ना बुझा पड़बो एटा काको. anyone not getting me. अरे किसी तक हुआ हाँ सर मुझे सर. डन. Yes, sir. बाकी समस्त बुझा पड़ो तो डोंट बी मतलब डोंट साई वे कारण तादरा निजर ही नुकसान हबो
है ना जदि तुम जानना यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हाई Sir, ईस्टर्न excuse me, sir. Atoll कोठी देखा जाए इंडिया रे, और fringe कोठी देखा जाए इंडिया रे. सो फ्रिंज तमरो लेट्स से द गल्फ ऑफ मन्नार ही गला एठी अछि श्रीलंका एरला गल्फ ऑफ मन्नार एठी फ्रिंज देखा जिवो गल्फ ऑफ कच्छ रे तुमको फ्रिंज देखा जिवो अंडमान निकोबार रे फ्रिंज देखा जिवो एटल इज लक्षद्वीप जाको हम कुचे लाकाडीप है ना दैट वुड बी डन एवरीवन Okay, sir. है ना नेक्स्ट व्हाई ईस्टर्न कोस्टल रीजन डोंट हैव कोरल एक्सेप्ट गल्फ ऑफ मन्नार दिस क्वेश्चन इनोवेटिव क्वेश्चन you can try it again question repeat karuchi mu why eastern coastal region don't have coral except gulf of mannar but gulf of mannar is not eastern coast that is the southern coast of india so now option is before you take a small kar diye so that here you can see now why eastern coastal region don't have coral now here you can see दिया जाइछि तुमको आंसर की दिया जाउछि सेट करा जाइछि केमति देखो कि ऑप्शन के फ्लोइंग ऑफ मोर रिवर्स इमर्जेंट कोस्ट स्टॉर्मी कोस्ट मोर फिशिंग है ना आंसर की रे देखि दियो ए एंड बी और दैट इज 1 and 2 one only 1 3 1 2 3 4 which one is going to be answer 1 and 3 1 and 3 okay बाकी मु गोटे सकाळे 1 2 I think. मु सकाळे 1 D sir. D sir हबा सर all the above, all the above. अरे मु सकाळे कोन कहितली मने पडुचे ना मने पडुनी मु आज्ञा सेया सर आप पचार Yes sir. कोन application कहितली एप्लीकेशन बेस्ड this ताले एटा कोन एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू दैट मींस ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी ना बुझा पडुनी टेक्निक मु तुमको कहितली किछि जदी जणा नै तुमको क्वेश्चन को देखियो ये को प्रकार क्वेश्चन ये होछि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एमती बहुत सारा ट्रिक मो पाकर अछि हला बट किछि तुमको शेयर कराबो सब शेयर करले तुम पाठ पढिबोनी तमे शेयर कराबोनी बुझ पड़छ नै तो ओनली जोटा दरकार से दिया बुझ पड़छ कने सब शेयर करले तुमका कहीं पाठ पढिबोनी बुझ पड़छ से करते हेडे दीज आर सीक्रेट थिंग्स यू नीड टू हैव जेतले तुम सैचुरेटेड हो सेतले दिया जो डोंट वरी आगे पढ़ी सार तापर सीक्रेट जिनस तापर जानिबो कि एमसीक्यू केमते सॉल्व करा जाय देन लास्ट रे तुमको कहबो प्रीलिम पूर्वरु लास्ट प्रीलिम को थियो 5 डेज किबा 10 डेज दैट टाइम आई विल गिव यू द ट्रिक हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यू विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट केमते सॉल्व करा जेतले हम पाखरे बहुत इंफॉर्मेशन थिबो डाटा थिबो और सेते बेले तुमको दिया जो एबे तुमको कहले पाठ पढिबोनी किछि लाभ होबनी मोर कहया भी बेकार जीवो बुझि पड़छ नै आज्ञा सर तो ये थिला तमरो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपैक्टेड क्वेश्चन होप अच्छा कोन तुमको कोन लागु छी वेदर दिस क्वेश्चंस आर मतलब क्वेश्चन रो क्वालिटी केमती एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड सर